Good evening, friends. Again, I actually welcome you with me to have some discussion as a matter of interaction like that. But here, interaction is really supposed to be in the shape of video, you can say. Video in the sense, I'm simply alone here in this chamber right now, the clinic, you can say here. Despite all the thing, I simply want to say you something in the sense. You see on the television a kind of scenario is the scenario in the sense all the leaders are involved in different type of activities. Some persons are just alleging after that counter allegation is there. Everybody is actually claiming it about that they are really supposed to be free from any type of just stigma, any type of fault like that. But that is not our question, you can see here. This democracy, as a matter of fact, is told to be just originated from India as a whole. Democracy is thought to be, you can say about that, India is thought to be the mother of democracy, and after that this credit goes to Greek like that, you can say. Yeah? It is told that democracy is the government of the full. Sometimes it is told that democracy is the government of the people, by the people, and for the people on the part of Abraham Lincoln. Sometimes it is thought to be so, democracy is the government of the people ruled by some representative, which you call, you can say it about that, I mean to say it about that, your MP and whatsoever things are there, representative like that. But didn't you ever think the person you are going to just select or maybe elect, whatsoever the persons are there, have you ever thought it about that the person you are voting and that person is really supposed to be just doing something worthwhile for the sake of the country as a whole, you can see. Many a time this happens to be so. Somebody comes and he tells it about that I just give this party the vote. Just yesterday one of the persons simply asked me about that what party are you going to just vote. As a matter of fact, I would like to say this is secret to a franchise like that. Don't tell anybody who just cast your vote or not. When you tell it about that, it becomes open. When it becomes open, what is the value of your vote like that? It's here. So no need to tell the thing. But I simply just make some sort of pink, just a point you can see here. Whosoever person you vote, it is your right. But you must be just asking some of the question to the leader. First of all, what is his qualification? Second is whether he has gone through the constitution. Third is, does he know how to deliver a speech? Fourth, you can say to her that does he write his own speech? Or if written speech is given, can he write it himself? Now the question here is that has he remained ever hunger? I mean to say to her that, my dear friend, this is 21st century, not to speak of that, this is the century of machine. You come out of stomach, you come out of mind, you come out of your psychosocial, you come out any of the thing. I mean to say to that death is ultimate end. Death will lay the icy hand on the head of any person. No need to worry about the death. No need to worry about the torture. Out of the torture, you can say to that pleasure comes. Out of the difficulty, personality comes. Is it not, sir? Maybe because of that reason, I simply want to say to that you must come. I simply just tell one question. After 75 years of independence, do you feel yourself to be free? Can you reach to the very leader whom you just select? No, it is not possible. Not possible in the sense you will not be just allowed to reach there. By the time vote is not given, you are the master. When you just cast the vote, after that you become servant. It is not here. Servant is treated like servant. It is not here. But as a matter of servant is master in the democratic system of the government. But it is written on the paper, but in the practice it is different in the sense. When person selected becomes minister, he becomes king. And king never actually bothered for the common people. And unless common people are there, I don't think it over that a king will be king like that. And I simply want to say to that these are the things you must ask your leaders. Besides that, one thing more is there. All the leaders, whosoever persons are there, even parshads are there, even gram panchayats are there, they are given certain amount in crores to just make the development of their area. You ask the question, you my dear sir, can you tell me what are the things you did do in the 5 years? Election over, unless 5th year is actually coming, I don't think it over that persons are knocking at the door you can see. And I can't say it over that work is not done. Work is done, it is seen. But despite all the things, the extent, you can say area, the work had to be done, that is not there. Still, I think some sort of variation is there, some sort of calamity is there, some sort of, you can say the distinction is there. And unless and until we cement almost all the gaps, maybe of caste, maybe of creed, maybe of language, maybe of region, maybe of color, maybe of whatsoever things are there, we are not likely to reach to the area where we simply want to reach by telling it over that entire world is a family. And when one family is not actually handled, how can you think it over that
Just 6 Arab pair, 6 Arab family can be just joined together with one single beats and whatsoever things are there. It is mere philosophy, but theosophy here fails when we tell something and work something. Is not here. My dear friend, sometimes I simply, you can say to that, put a question like this. Iqbal has told very nice thin line, Sare jahan se acha Hindustan hamara. Now my question is there, what about other country? Are they not wise? Are they not great? Let it be there. You should not be over possessive. Besides that, one of the dialogue is of, I mean to say it over there, this Nana Patekar, that tells it over that. जहाँ 199 लोग मेहमान होता है वहाँ हम कहते हैं भारत महान है, ये भी जस्टिफाइड है। आप एक जूता फेंक के एक भीड़ में फेंक के देखो, उसके बाद देखो उसमें कितने लोग ईमानदार हैं और कितने लोग बेईमान हैं। ईमानदार का मतलब होता है जो बोलते हो करते हो, जो दिखता भी है, केवल बोलने से नहीं होता। और बेईमान हो तो बेईमान भी बोलो, ईमानदार हो तो ईमानदार भी बोलो, है ना। अब now the question here is that I should not actually speak Hindi, but even then let me just tell it about that for the benefit of yours, like that you can see it. You are afraid of one thing. What is the thing? To be killed. Do you think that you have taken nectar? Do you think that any of the leaders has taken nectar? No, nobody has taken nectar. When the time is up, certainly will go. When you go, certainly you know something. You make a flow, you make a ray, so that other person should actually follow you. I know it about that, the thing I tell, many of the person actually just opposite in the sense they are not willing to listen like that. And one thing more I would like to say about that. Now the time has come, you look for alternative of which? Leaders, is not here. The leaders you see on the television, same thing, and so same type of dialogue, there is no change at all. So I mean to say, why don't you actually select from the very person, those are actually 13 crore are educated and unemployed. If they come, just motivate them to come. If they come, certainly they will be better in comparison to existing leaders. Because in the region, I tell many a sort of time, they have actually tasted hunger. They have seen, you can say, scarcity. They have simply seen desperation. Not to speak of that. Yeah, whatsoever things are there, they have actually seen. Sometimes they come to this Mukherjee Nagar or maybe any of the places in metro city or maybe a state capital. They come for the sake of, you can say, about this coaching center. Everywhere they are looted like anything. The persons giving the coaching, they are taking lakhs and lakhs of rupees. After that, they are not qualifying their thing. By the time they return to the village, they sit there idle. They simply think it out that their age is gone, everything is gone. It's not here. There is nothing there. What I simply want to say is still there is something in the sense. You look at the assembly, you look at the, you can say it about that parliament, or you look at the, you can say it about that this Lok Sabha. There is also vacancy, and you can actually apply there. Here is the process of examination is a little bit difficult, not little difficult, it's a little bit different. And I simply want to say it about that. Let me just tell it in Hindi. आपको खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है. पाने के लिए बहुत कुछ है. आपके पास पैसे नहीं है, आप घूमो ना गली गली. ये जो बड़े लोग हैं ये भी चंदा लेते हैं. किससे लेते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट से लेते हैं. किससे लेते हैं? बिजनेसमैन से लेते हैं. आप आम आदमी से चंदा लो, 1-1 रुपया मांगो ना, वो लोग देंगे यार. 1-1 रुपये जोड़ के आप 10,000 जितने भी होते हैं नॉमिनेशन की फाइल करो. आप वहाँ खड़े होगे तो इनसे अच्छे बोलोगे क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने कम संविधान को पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, ये हो वो. अगर आप आते हो तो मुझे लगता है ये हमारे हिंदुस्तान में और भी 4 चांद लग जाएगा. जो हिंदुस्तान आज चांद की तरफ चला गया है, सूर्य की ओर जाने की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ तक हम चले गए. बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूँ उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं. लेकिन जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलता है तो सारा का सारा चच्चू बेकार हो जाता है. हम लड़ने मारने की बात करते हैं, हथियार बनाते हैं. क्या उसकी ज़रूरत है जब पेट में अनाज नहीं होता है? क्या हम प्यार मोहब्बत से नहीं रखते? क्या हमारे पास अधिकार है कि किसी का बना बनाया घर उजाड़ दें? अभी यूक्रेन और असम में आप देखिए 2 साल हो गए, लगभग वार होता जा रहा है. वो जो बिल्डिंग थी तहस नहस कर दी गई, उसमें आदमी भी मारे गए, सैनिक भी मारे गए लाखों. क्या वो लड़ाई चाहते थे? क्या मुझे तो नहीं लगता है. क्या कोई चाहता है कि रिफ्यूजी बनना? कोई चाहता नहीं. कोई चाहता है कि उसके पेट में उसके बच्चे मर जाए? नहीं. तो आप सोचिए, मैं फिर से थोड़ा और आगे जाके बोलता हूँ, दुनिया में जहाँ भी लड़ाई हो रही है, क्या किसी नेता को मरते देखा है? क्या जब नेता नहीं मरता है तो आप जनता क्यों मरना चाहते हो? आप सैनिक क्यों मरना चाहते हो? इस बात को भी सोचो, है ना. आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो लेकिन आपकी स्तर दो दर्जे का है. जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है मंत्री बन जाता है, MLA बन जाता है, वो नंबर 1 में आता है और अपने हुक्म चलाता रहता है. तो भाई कुछ ऐसी हो, चाहो तो संविधान बदल दो, है ना, चाहो तो उसमें अमेंडमेंट भी लाओ. और एक सवाल मैं फिर से पूछता हूँ, एक प्यून को प्यून बनाने के लिए का 8वां पास आपको चाहिए, लेकिन एक बात यह भी मुझे बता दीजिए कि वैसे व्यक्ति जिसके हाथ में देश का बागडोर
थाम थमाते हैं, उसकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए। जब आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएट होता है कम से कम, है ना, तो मंत्री बनने के लिए भी तो कुछ ना कुछ एजुकेशन होना चाहिए। जब आदमी 60 साल में रिटायर हो जाता है तो कोई ये नेता क्यों नहीं रिटायर होगा, उससे भी आप रिटायर करिए, है ना। जगह खाली होगी तभी तो वो चांस मिलेगा, जगह ही नहीं खाली मिलेगा, खाली नहीं होगा तो चांस क्यों मिलेगा। और मैं आगे बात बोलता हूँ, आप टीचर को सैलरी नहीं देना चाहते हो, आप बना देते हो गेस्ट टीचर, आप बना देते हो गेस्ट लेक्चरर, और आप बना देते हो न्याय मित्र, और बना देते हो ग्रामीण मित्र, व्हाट्सएवर थिंग्स आर देयर। क्या नेता गेस्ट नेता नहीं हो सकता? क्या गेस्ट मंत्री नहीं हो सकता है? जब वहाँ पर ला सकते हैं तो खुद भी करो ना भाई, जब आप करोगे तभी ना लोग आपको फॉलो करेगा। आपके लिए कुछ और ही व्यवस्था, बाकी लोगों के लिए कुछ और ही व्यवस्था। ये कैसा राजतंत्र है ना सर, कैसा जनतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब होता है सब बराबर है ना, और सब बराबर ही नहीं है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, लेकिन कितने लोग बोलते हैं, वो बोलने से घबराते हैं, लगता है कि कोई आके उसे लाठी मार देगा, है ना। राइट टू रिलीजन, अपनी मर्जी से हम रिलीजन भी नहीं रख सकते हैं, ये भी गलत है, लिखा तो है। राइट टू अर्न लाइवलीहुड, अर्न लाइवलीहुड के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ हम जाते हैं तो वो वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है, लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है। और मैं उस समय की बात करता हूँ जब लोग धोती और लंगोटी की बात करते थे, उस समय मुझे नहीं समझ में आता था क्या है। अब तो चूँकि कह सकते हैं कुछ दिन का मेहमान हो, पका आम हो, कब टपक गया कुछ नहीं है ना। तो अब समझ में आता, ये शोषण उस समय भी था, आज भी है। आज पहले शोषण होता था लंगोटी वाले का, आज शोषण होता है लैपटॉप लेबर का। उसको दिया जाता है 10-15 हज़ार, साइन करवाया जाता है 30 हज़ार में, है ना। और जैसे कि मान के चलिए, कभी कभी मैं पूछता हूँ कितनी चल रही है, 7 हज़ार है, लेकिन साइन करवाते हैं 7 हज़ार है, 10 साइन करवाते हैं 17 हज़ार में। तो ये कैसा द्वयं दर्जा है ना। आप सरकारी नियम के हिसाब से किसी भी लोगों को नौकरी में रखते हैं तो कम से कम 20 हज़ार का तनख्वाह होता है। क्या यह पूरा पालन होता है? मेरे प्रधानमंत्री महोदय या जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए, है ना। और ध्यान इसलिए दीजिए कि जैसे कि मैं सिंगापुर में हमने पढ़ा था, सिंगापुर के बारे में, वहाँ आईएएस या बड़े ऑफिसर को इतना अधिक पैसा दे दिया जाता है सैलरी में, जहाँ चोरी करने का कोई गुंजाइश नहीं होता है। आखिर क्या वजह है कि तनख्वाह भी बड़ा मिलता है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? करप्शन में जाता है, करप्शन में जाता है, फिर पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, जेल में जाने के बाद इस तरह की लंबी चौड़ी बातें होती है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ जो समय बीत रहा है उसका कोई सॉल्यूशन खोजिए? और वो सैल्यूट करना है, सैल्यूट करवाना, उसको भी छोड़िए, है ना। अगर आप में काबिलियत होगी, आप में, और ये जो रिस्पेक्टेड और नॉट डोमिनेटेड, नॉट डिमांडेड लाइक दैट। खैर जो भी हो, देश हमारा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हमारा का मतलब मेरा ही नहीं है, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सबका देश है ना। तो चलिए, मैं इसे, चूँकि मुहिम हमारा पाक से है, पाक से ही नहीं, जहाँ स्कूल में भी रहा तो उसी से हमारी रही कि स्थिति सुधरे, है ना। और जो स्थिति सुधारने वाला होता है उन्हें बहुत झेलना पड़ता है, और मैंने भी झेला, आज भी मैं झेल रहा हूँ, है ना। तो खैर उन बातों को छोड़िए। अब यहाँ पे मैं एक नारा लगाता हूँ, आप भी बोल सकते हैं अगर चाहते हैं तो। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि खाली हमारा ही देश न्यारा है, बाकी दूसरी दुनिया का देश वो ठीक नहीं है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ, इसका मतलब आप सेल्फ, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। कल मैं कोशिश करूँगा, और ये क्या कहते हैं इसको, ऑनलाइन आने का, या मैं पहले कभी नहीं, लाइव आने का। ढेर सारे लोग मेरे से पूछते हैं आप क्या हो, कौन हो, नहीं हो। कल मौका मिला तो मैं इसी समय लाइव आऊँगा। आपको जो मेरे से सवाल पूछना है, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ, आप पूछ सकते हो। ये फेसबुक वाले भी लिखते रहते हैं, आपके फॉलोवर्स आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो चलो, आज का कल 7 बजे इट इज़ डिसाइडेड, आई विल बी लाइव, है ना। And the topic will be any that will do. As besides that, I request you about that. I take the interview of the persons or professionals belonging to any faculty, maybe IS is there or maybe even laborer is there. I want your feedback. Feedback in the sense, is it boring? If it is not interesting, you simply give me some suggestion. Partly Hindi I speak, partly English I speak, only because of the region. All the persons should take it here. I want to start a class of spoken English too, and there too you can just derive the pleasure. And I simply tell it about that.
If you know how to speak English, how to write English, how to understand English, and how to read English, and you know computer education, certainly will get a job of 70 to 80,000 rupees a month there in call center. This is taken for granted. As I tell, even science teacher, maybe by reading your physics and chemistry, you do not get the thing. After that, you will get it. Read not, sir. And all of you must cast your vote. I won't tell that you cast the vote to this party or this person. It is your selection, but you must actually inquire about the suggestion I have given, about the point I have given, like did he read constitution, etc., etc., etc. After that, question marks is there. Country is yours. You youth, you will have to live there in India up to 10 years, not myself. You simply make some better India. It not, sir. Not better India, but best India, where people live with cheer. It not, sir. No complaint, no sort of stigma, no sort of allegation, nothing at all. This much. Thank you. Thank you.